Chinese Lunar New Year is about family. Okay. Family gathering. Okay. Different family gathering. Okay, Yeah. different. In Hong Kong, it's already quite few gatherings already. Oh, yeah. okay. Because there are just a few public holidays. Yeah. So how many public holidays do you take? 3 or 4 days. So you are going to enjoy at home or you have planned to go somewhere? Yeah, Just- depends on your choice. Because I have 10 days holiday. I have 10 days because I take some Annual leave. leave. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आदि एक्सप्लोरर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो गाइस इस टाइम मैं मौजूद हूँ विक्टोरिया पार्क हांगकांग में और इनका चाइनीज़ न्यू ईयर चल रहा है, तो मैं इसको कवर करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। तो देखते हैं ये लोग किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे ये जो ग्राउंड है, ये आप देख सकते हैं सारा। तो अभी अंदर चलते हैं तो देखते हैं क्या मामला है, ये लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं। एक्चुअली ये आफ्टर कोविड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम के लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। इससे पहले तो कोविड के दिनों में कुछ बारिशें भी होती रही हैं और आज भी बारिश थी, वक्फे से होती रहेगी, लेकिन फिर भी मौसम ठीक है। ठंड तो है लेकिन मौसम ठीक है कि लोग इंजॉय कर सकते हैं बाहर निकल के। इससे पहले लोग पिछले साल जो इनका चाइनीज़ न्यू ईयर था वो इन्होंने घर में ही एहतमाम किए हुए थे, बाहर नहीं ये एहतमाम कर सके। इनका ड्रैगन डांस होता है, फायरवर्क्स वगैरह होता है, तो इनका फायरवर्क्स भी अब आ रहा है। इंशाल्लाह मैं उसको भी कवर करूँगा। तो फ़िलहाल चलते हैं, ये चाइनीज़ मार्केट लगी हुई है, इनकी एग्ज़िबिशन्स भी एक किस्म की लगी हुई है। तो देखते हैं कि वहाँ पे किन किन चीज़ों का एहतमाम किया गया है देखने के लिए और लोग क्या क्या शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं। तो गाइस दिस इज़ टॉफू, ये भी एक फूड है चाइनीज़ कल्चर में, चाइनीज़ लोगों का। तो आगे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें, और लोगों से भी बात करते हैं कि वो किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। Hello sir, hi, how are you doing today? I'm fine. Yeah, so where are you from? I'm from Twin Moon. Twin Moon. So you are studying? Secondary 1. Okay. How you are going to celebrate? We buy this. Okay. Buy flowers and eat dinner
At home with family? with the family. Okay, so you also you have already been invited your relatives and to get together, have dinner or lunch together at home. Something is like that. Eat dinner. Dinner together. Yes. Okay. Okay. Thank you very much. गाइस ये इस साइड पे इनके फ्लावर्स हैं, यही फ्लावर्स लोग घरों में लेके जाते हैं डेकोरेशन के लिए चाइनीज़ न्यू ईयर्स के दिनों में। कुछ पहले ले जाते हैं, कुछ सेम डे में ले जाते हैं। गाइस इन फ्लावर्स का नाम है ऑर्चिड। ये डिफरेंट कलर्स में मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं। तो गाइस ये वाला ये जो आप एक पौधा देख रहे हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं पीच ब्लॉसम और चाइनीज़ पतंगवा में कहते हैं थोपा। चाइनीज़ लोगों का मानना है कि न्यू ईयर के दिनों में ये इसको लेके जाते हैं और घरों में डेकोरेट करते हैं और 3 दफ़ा इसके सराउंडिंग का चक्कर लगाते हैं। इनका मानना ये है कि चाइनीज़ न्यू ईयर में उनके गुड लक के लिए ये इसलिए इनको ये लगाते हैं ताकि उनका बिज़नेस में सक्सेस हो, उनकी लाइफ में सक्सेस ही सक्सेस हो। तो इसलिए ये इन चीज़ों को इन ट्री को लेके जाते हैं घरों में सजावट के लिए। Busy day. Busy day. So how you are finding what is the difference between this time Chinese New Year before COVID, between COVID and after COVID? Figuring out now. Figuring out what is the We difference? just haven't observed. So did you notice that during the COVID days there was not a food stall here, and now the food stall is already resumed back? Oh yeah. So you are really enjoying here. Quite. I like this. Oh, that's good. I like having this while walking. So you have been already purchased the flowers to decorate your home from their stalls. Yeah, I already purchased them. Yeah. So what's your celebration plan on this Chinese New Year? Taking rest. Taking rest? Taking rest, sleep. Actually, Yeah, what Chinese culture, what actually you guys do on these days specifically? If you talk about tradition. Chinese Lunar New Year is about family. Okay. Family gathering and gathering. Okay. Different family gathering. Okay, different. In Hong Kong, it's already quite few gatherings already. Okay. Because there are just a few public holidays. Yeah. So how many public holidays is different? 3 or 4 days. Okay, so you are going to enjoy at home or you have planned to go somewhere? Yeah, Just- depends on your choice. Because I have 10 days holiday. I have 10 days because I take some Annual leave. So you are from Hong Kong or? Yeah, from Hong Kong. Yeah, from Okay, Hong where Kong. do you live in Hong Kong? Yeah. Quite far away, we live in new territories, but I lived here before, so I come here to remind myself of my childhood. Yeah. Okay, so you came here just for enjoy over Yeah, here yeah. in the market. Okay, thank you so much. Thank you so much. Okay. तो फ्रेंड्स मार्केट घूमते घूमते मैंने एक जगह इनसे बात की है। ये जो स्टॉल आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये
सारे वहाँ पे बच्चे लेके ये घूमते रहते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का मानना है कि ये भी इनका गुड लक है। मीन के ये चाइनीज़ न्यू ईयर के दिनों में इसको ये बाय करते हैं और घर में डेकोरेट करते हैं। इनका मानना है कि जब ये ये ऐसे ये घूमता है, विंडी हवा चलती है तो ये घूमता है, तो उनका गुड लक जो है वो उनके घरों में एंटर होता है। कल से इनका चाइनीज़ ईव नाइट स्टार्ट होगी। आज इनका लास्ट वर्किंग डे है और कल से ये लोग अपनी डिनर वगैरह का अरेंजमेंट करेंगे। कल का दिन इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो कल ये सब अपना डिनर एक दूसरे के साथ एंजॉय करेंगे और इसी जगह पे आएंगे डिनर के लिए। तो इनके लिए कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है।你可以加一個椰皇都得嘅，50都係同價。一個椰皇，一個一個鄭州好唔好啊？係50，係啊，好清甜㗎，好唔好？唔好俾佢停，繼續。有啊，係啊，啱炸出嚟㗎，係啊，兩支50，兩支50，三支75，四支都得㗎，50蚊，好啊，多謝晒，多謝你啊，新年快樂！椰皇開緊呢個男仔，綠色衫嘅男仔，好啊，多謝晒，一支。啊，請等等啊嚇！即叫可以買啊！4飲翻支10支，先加嘅蔗汁啊，最佳拍檔。仲有車都唔解我嘅椰子椰皇啊，日軍選擇硬過無過，冇錯過。Very delicious. But also very hot. आप देख सकते हैं जैसे कि अब मैं बाहर आ चुका हूँ, एग्ज़िट कर चुका हूँ मार्केट से। तो आप लोगों ने देख लिया कि क्या क्या चीज़ें हैं अवेलेबल हैं यहाँ पे, लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं चाइनीज़ न्यू ईयर को। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं एक और व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।